Hey, hey guys, welcome back to my channel. So, let's learn about 5 highest paying jobs after learning Python. अगर आपका Python में बहुत इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है. Let's go ahead. The very first job is data scientist. The second is software engineer, and the third is AI researcher, and the fourth is data analyst. Fifth, machine learning engineer, and not last but not the least, data architect. लेट्स लर्न अबाउट डेटा साइंटिस्ट. उसमें आपको कितनी सैलरी मिलती है, क्या जॉब रोल होता है, वो देखता है. Data scientist, if you love to analyze data and you love to predict the future on the basis of data, then this job is for you. इसकी स्टार्टिंग सैलरी if I say in India is like 9 lakh per month, and it can go up to 50 lakhs with your experience. And I have also collected data from Google, and I have done a good research. अब यहाँ पे आपका एवरेज सैलरी जो है वो 12 लाख है पर ईयर का. अ, अब को चलते हैं नेक्स्ट हमारी जॉब पे. हमारा नेक्स्ट जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर. अगर आप पाइथन डेवलपर बनना चाहते हैं, देन दिस जॉब इज फॉर यू. लर्न पाइथन with full of your potential and become a software python developer. Now, coming for the salary part, एवरेज सैलरी इसकी होती है 2.6 से स्टार्टिंग होती है, एंड 15.1 तक एवरेज इसका रहता है. लेकिन आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट. ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट. AI researcher. AI researcher are responsible for developing researching artificial intelligence. इसका मतलब ये है, आजकल अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, देन that has been made from this AI researcher. They research all about AIs. They do create softwares for that, and chat gpt is one of those examples. Okay, let's talk about salary हमारी रेंज करती है 3 लाख से 55 लाख तक. यानी कि आपकी स्किल्स आज के टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांड में होने वाली ये जॉब है. एंड स्किल्स अगर आपकी सेट है, देन दे आर वेटिंग फॉर यू. गो अहेड गाइस. Now, let's go for the next job. This is data analyst. Data analyst is a part of like data science only. Scientists are like the top most job, and उसके नीचे data analyst आता है. Data analyst जो data available होता है, already available होता है, उसको analyze करता है, then interpret करते हैं उन data sets के ऊपर. And if you know Python, तो उसकी आप लाइब्रेरीज वगैरह यूज करके आप डेटा बहुत अच्छे से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं एंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर. Now, talking about the salary part for this, it ranges from 1.7 lakh to 12 lakh. And if I talk about इंडिया में हमारी अराउंड 6 to 7 लाख इसका एवरेज पैकेज होता है. गोइंग अहेड विद द मशीन लर्निंग इंजीनियर. अब ये तो सबसे ज्यादा फेमस है आज के टाइम पे. ML इज लाइक बूमिंग एट दिस मोमेंट. सो मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो इसमें लाइक पाइथन इज लाइक द की लैंग्वेज टू डेवलप दीज थिंग्स. ओके, टॉकिंग अबाउट द रेंज, इसका 3 to 21 लाख होता है एवरेज. एंड विद एक्सपीरियंस यू कैन गो अप टू 50 लाख एज वेल. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट job that we have, that is the data architect. Now, talking about the architect, then it is also a part of data scientist. Like data scientists are like the topmost job, and uske niche data analyst and data architect आता है. So if you are also interested in building the data sets, then this job is for you. Okay, now talking about the salary part. सैलरी आपकी होती है 14 से 43 लाख के बीच में. एंड नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट. डोंट बी लाइक कि मुझे सिर्फ पाइथन आती है. यस, डू यू डू नीड टू नो अदर लैंग्वेजेस एज वेल. सो नाउ completing my video with this, and if you like the video, do you know give do subscribe our channel for the further